हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली यहाँ पे जो मीटिंग का दौर है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फाइनली सीएलसी आईबीए यूनाइटेड फार्मर बैंक यूनियन की जो मीट की आउटकम है वो यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। सो इट्स अ ग्रेट अपडेट हेयर, सो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस अपडेट फ्रेंड्स मैक्सिमम, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। सो आप यहाँ पे सिग्नेचर्स देख सकते हैं क्या फाइनली फ्रेंड्स हुआ है। सो जीएस ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन उनकी तरफ से साइंड, मैनेजमेंट की तरफ से सिग्नेचर्स, एनसीबी एंड ऑल द यूनियंस वर प्रेजेंट देयर। सो द मीटिंग हैज़ बीन कंक्लूडेड, सो जस्ट नॉट हैज़ बीन रिलीज्ड हेयर। और फ्रेंड्स 11 अगस्त 2025 की जो अपडेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा मैटर क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से अपडेट है। ऑफिस ऑफ सीएलसी, अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज is attached on a separate sheet, so that is okay. So deliberation started between the parties with the review of the last meeting of the minutes of the conciliation meetings dated 17 June 2025. So at the various outset, the LD representation of the IBA submitted the developments in the tune of minutes of the meetings. So as per him, meeting on the issue of recruitment and PLI held in Delhi on 10th August, but nothing could not be deprived. तो वहाँ पे nothing happened there, could not be deprived till now. However, both the parties are discussing with a positive mindset. Okay, very nice. So believe that some amicable solutions can be arrived at. So far as security to the bank employees is concerned, DFS and IBA both have issued letters to the PEX level of the state administration to appropriate actions so that the concurrence may not be repeated occurrences. The union was also aware that DFS and IBA have taken steps to ensure security of the bank employees. However, they were of the view that the bank management must recruit armed guards as provision of the bank. Unless such armed guards are recruited, such occurrences may not be stopped. तो ये बहुत सही बात है। The LD representative of the union were very much agitated on the issue of 5-day banking of the government has not yet arrived. So they were pressing hard to allow them to use their ultimate right under the law, that is strike. So in view of the facts above, time to discuss the PLI and recruitment issue at the BPS level is extended with the advice to have at least one meeting in a month and endorse the copy of the minutes to the CLC for information. So in respect of security, the management of banks are advised through IBA to take appropriate steps as requested by the union so that 5-day banking का जो दोस्तों यहाँ पे मैटर है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। सो यहाँ पे हैज़ रिटन अ DO लेटर टू द सेक्रेटरी DFS टू एक्सपीडिएट दी मैटर। सो नेक्स्ट जो मीटिंग की डेट है दोस्तों वो 15 अक्टूबर 2025 यहाँ पे अनाउंस हुई है। सो नेक्स्ट डेट इज़ 15 अक्टूबर 2025 एट 11:30 AM। सो यहाँ पे हमें तारीख पे तारीख ही दोस्तों मिल रही है, बट वी डोंट नो हाउ फार द मैटर वुड बी। यहाँ पे एक्सटेंड करते रहेंगे मैटर को। So please make sure to share this update because this is something really important and many of the pensioners friends have been consistently requesting us to share. So दोस्तों we have done our part, so please make sure to subscribe to the channel and share this important update and please stay tuned to the channel for the latest banking, pension and other updates. Thank you friends, thank you for supporting us. Take care all.